दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न आशुभा। ओम शांति शांति शांति। आज सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पूर्णिमा की हम कर रहे हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के हिसाब से अपना DFW हिंदू टेम्पल में भगवान श्री सत्यनारायण का पूजा इस समय हम शुरू कर रहा है। शाम का समय लोक कल्याण के लिए, सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण होने के लिए, अपना मंदिर के लिए सुख शांति समृद्धि होने के लिए भगवान का प्रार्थना हम सब आप सबके तरफ से अपना बड़ा गुरु जी शुक्ला जी, मेरे साथी पृष्ठ विनोद जी, हम सब लोग मिलके आपके हित में हम भगवान सत्यनारायण पूजा शुरू करने वाले हैं। बोलो जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रार्थना प्रकह महागणपते नमः ध्यायामहे। शमोखाश्ले गदन्तस्य कपिलो जगन्नाथः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक। महागणपते नमः ध्यायामि। ध्यानार्थे नमस्काराणि समर्पयामि। प्रार्थना प्रकह पूजन कर्म प्रारंभे प्रधान संकल्पः। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोरनुज्ञया अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री शार्वरी नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां बुधवासरयुक्तायां शतभिषा उपरि पूर्वभद्रा नक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य यजमानेन आलय सर्वदेवता प्रीत्यर्थम् आलये स्थिता सर्वेषां पंडितानां सर्वेषां यजमानानां पालकवर्गाणां सर्वभक्ताभीष्टफलसिद्ध्यर्थं सत्यनारायण स्वामिनः प्रीत्यर्थं चरणारविन्दयोः सत्यनारायण स्मृत पूजां च करिष्यादौ महागणपति पूजां पंचलोकपूलक पालक पूजां अष्टदिक्पालक आदित्यादि नवग्रह देवताराधनं करिष्ये। यजमान पूजा कर्तुः जयम्बे अपना गोत्र परिवार नाम दे दो। आप भी जो भी वॉच कर रहा है फेसबुक में प्लीज अपना अपना नाम लीजिए। भगवान का संकल्प में सब परिवार का नाम बताइए। हम गणेश जी का पूजा के साथ सत्यनारायण का पूजा शुरू करने वाले हैं। सर्वेषां भक्तजनानां सपरिवार सकुटुम्बस्य सर्वमंगल प्राप्त्यर्थे प्रार्थना प्रकः पूजन कर्म प्रारंभे महागणपते नमः ध्यायामि। ओम महावक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महागणपते नमः वाहयामि। महागणपते नमः ध्यायामि। महागणपते नमः आसनार्थे प्रार्थना प्रकः गन्धाक्षत पुष्पाणि च समर्पयामि। प्रार्थना प्रकः पाद्योपाद्यं हस्तयो अर्घ्यं शुद्धोदक स्नानं 3 बार जल चढ़ाइए भगवान गणेश के ऊपर। मुख्याचमनीं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। रक्तसूत्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। आभरणं समर्पयामि। दिव्यश्री चंदनं हरिद्रा कुंकुमं पूजयामि। हल्दी कुंकुम पूजा ओम हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। विघ्नराजाय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम हेरम्बाय नमः। स्कंदपूर्वजाय नमः। गजाननाय नमः। ओम शिवतनयाय नमः। गणाध्यक्षाय नमः। सर्वसिद्धिकर श्री महागणपतये नमः। परिमलपत्र पुष्पाणि पूजयामि। आम्रफलं सूतफलं कदलीफलं निवेदयामि। ओम भूर्भुवस्सुवत्सवः सत्यन्वर्तेन परिषिञ्चामि। अमृतमस्तु। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम ज्ञानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा।
दर्शयामि। नमो भ्रातस्पते नमो गणपते नमः प्रमदवदाय नमस्ते अस्तदम्भोधराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने विघ्नाय देवताय नमो नमः। महागणाधिपतये नमः। मंगलनीराजनं दर्शयामि। दर्शयामि। गणेश भगवान की विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शरणाय जगज्जिताय नागाननाय सूर्यज्ञाय भूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। पुष्पं समर्पयामि प्रतिष्ठां समर्पयामि क्षमापणं समर्पयामि प्रार्थनां प्रकः सर्वोपचारार्थे नमस्काराणि च समर्पयामि। अस्मिन् कलशे सर्वतीर्थेभ्यो नमः ध्यायामि। ॐ वरुणस्य हदम्बरमसि वरुणस्य स्कम्भस्य अनिस्तो वरुणस्य हृदसदन्मसि वरुणस्य हृदसदन्मासीदा गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गुरुवासास्मिन् कलशे सत्यनारायण भगवान् ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्मरामि नमो नमः। गंगादिस्मस्ततीर्थेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्मरामि नमो नमः। पाद्यदि समर्पयामि मुख्यात्मनीयं जलं समर्पयामि शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रान्ते अक्षतां समर्पयामि जिज्ञोपविदान्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते पुष्पां समर्पयामि तिलकं धारयामि गन्धद्वारं दुरादर्शन्नितपुष्टं करेष्मि। ईश्वरीं सर्वभूतानां साम्योपाह्वये श्रियं त्रिगन्धं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि नमो नमः। पुष्पिनानाविदर्शभ्यै कुमुदैर्दजम्बुकै पूजा ते क्रियतां तुभ्यां पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं च पुष्पमाल्यं च समर्पयामि नमो नमः। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणासुरा मोक्षादसागरा सर्वे सप्तदेव वसुन्धरा ऋग्वेदो सामवेदो अथर्वणः अङ्गेश्च वेदा सर्वे षड्सु समाददा। अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करतदा आयन्तु देवभूयातं दुर्गक्षयकारकाः। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गङ्गादिस्मस्ततीर्थेभ्यो नमः। बंभरुणाय नमः। प्रचेतसे नमः। मकरवाहनाय नमः। तीर्थराजाय नमः। समर्पयामि धूपं दर्शयामि वनस्पतिरसोद्भूतगन्धाढ्यगन्धमुत्तमार्गया सर्वदेवानां प्रदीयताम्। धूपं दीपं दर्शयामि समर्पयामि नमो नमः। अम्बरफलादि कदलीफलादि नैवेदयामि। प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा स्महनाय स्वाहा परब्रह्मणे नमो नमः। स्तोमकृत्कालाध्यात्मनीयं जलं समर्पयामि। पुनः प्राणाय स्वाहा अपनाय व्यानाय धनाय स्महनाय स्वाहा। हस्तोमकृत्कालाध्यात्मनीयं जलं समर्पयामि। मुखवासताम्बुलान्ते दक्षिणाद्रव्यान्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरतिक्यं दर्शयामि। ॐ जुम्भगाय विद्महे पायहस्ताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। गुरुवासाय नमः। आनन्दमङ्गलनीराजनं दर्शयामि। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। नमो नमस्ते स्वर्गप्रभाय श्वेतहाराय सुमङ्गलाय शोपाशहस्ताय सशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। पाशुपाणि नमस्तुभ्यं वदवनीवनायक यावत् कर्म समाप्ति स्यादावत् त्वं संस्थिरो भव। बोले वरुण महाराज की जय। गंगा मात की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। वरुणाय नमो भो ब्राह्मणाय नमो महेश कुटुम्बे आशीर्वचनं प्रेक्षमाणाय पुण्याः भवन्तो भवन्तस्तु पुण्यानं कल्याणं भवन्तो भवन्तु अस्तु कल्याणं स्वस्ति भवन्तो स्वस्ति शिरस्तो भवन्तस्तु श्रीः रुद्रिं भवन्तो कर्मरुध्यताम् आयुकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता भवतो भवतः। कुलदेवता इष्टदेवता ग्रामदेवता स्थानदेवता सद्गुरुभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। नवग्रहादिदेवताभ्यो नमः। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। पंचलोक देवता 10 की
देवता महारुद्राय नमः सर्वमुद्रार्थी प्रार्थना प्रग्रह ध्यानार्थी नमस्करामि समर्पयामि। अतः महाविष्णु स्वरूपाय श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः ध्यायामि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शङ्खचक्रं सकेतकुण्डलं सफेदवस्त्रं शिरसि भूषणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पञ्चनद्यः सरस्वती मह्यन्ति स्रोतसः सरस्वती दुमञ्चला स्वदेवते भावसरिता। हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुख्याचमनीं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि आप्यायस्व समेतते विश्वतस्य मुष्णीं भवावाजस सङ्घटे नधिक्रावणकारिषं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः स्वरभिनमघाकरत्रणायुगं शितारिषतं शुक्रमसि ज्योतिषि तेजसि देववसोतात्मना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसः सूर्यस्य रश्मिभिः मधुवातारतायते मधुक्षरं तिसिन्धवः वाग्वीर्णसंस्कृतिः मधुनक्तमधुषि मधुवत्वाद्यवगमृजामधुजवस्तुनः कृतामधमान्नां वनस्पतिर्मधुमागमस्तु सूर्यः मास्वीर्गावो भवन्तः ता शर्करा भवन्नो तच्छर्करा नागं शर्करत्वं वज्र वै शर्कराः हसोदाग्निर्दक्षिणावृतं शर्करेण स्नापयामि पञ्चामृतफलोदकस्नानं समर्पयामि सत्यनारायणस्वामिने नमः महालक्ष्मीदेव्यै नमः शुद्धजलेन स्नापयामि। जोशी जी वहाँ पानी है दे दी। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चरमण्वती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुरनदी ख्याता जया गण्डकी पूर्णा पूर्णजले समुद्रसरितः स्नानं सदा शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानार्थे प्रार्थना नमस्काराणि च समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उत्तरीयं समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि गन्धद्वारान्तराधर्षां नित्यपुष्टां करीश्वरीं सर्वभूतानां श्रियं दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि। तेल किया अभिषेक किया चंदन लगा हल्दी कुमकुम लगा अक्षता महाविष्णवे नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि आभरणं समर्पयामि अलङ्करणार्थं पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि फूल चढ़ाकर न भगवान के चरण सत्यनारायणाय नमः बोलिए। ओम श्री कृष्णाय नमः कमलानाथाय नमः वासुदेवाय नमः सनातनाय नमः वसुदेवात्मजाय नमः पुण्याय नमः लीलामानस विग्रहाय नमः श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः विश्वदावत्सलाय नमः हरये नमः चतुर्भुजा शंखाभ्यायुधाय नमः देवकीनंदनाय नमः श्रीशाय नमः नंदगोपप्रियात्मजाय नमः यमुनावेगसंहारिणे नमः बलभद्रप्रियानुजाय नमः पूतना जीविताहराय नमः शकटासुरभञ्जनाय नमः नन्दव्रजानन्दिने नमः सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः नवनीतवृत्ताङ्गाय नमः नवनीतनवाहाराय नमः मुचकुन्दप्रसादकाय नमः षोडस्त्रीसहस्रेशाय नमः त्रिभङ्गिने नमः मधुराकृतये नमः शकवाकमृताद्वेन्दवे नमः गोविन्दाय नमः योगिनां पतये नमः वत्सवादचराय नमः अनन्ताय नमः देवकासुरभञ्जनाय नमः तृणीकृतवर्तनाय नमः तमालश्यामलाकृतये नमः गोपगोपीश्वराय नमः योगिने नमः कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः विलापतये नमः परं ज्योतिष्ये नमः यादवेन्द्राय नमः यदुद्वाहाय नमः वनमारिणे नमः पीतावासव्ये नमः पारिजातापहारकाय नमः गोवर्धनाचलोद्धत्रे नमः गोपालाय नमः सर्वपालकाय नमः
अजाय नमः निरंजनाय नमः कामजनकाय नमः कंचलोचनाय नमः मधुघ्ने नमः मथुरानाथाय नमः द्वारकानायकाय नमः परिणे नमः वृंदावनानंद संचारिणे नमः तुलसीधाम भूषणाय नमः चमन्तकमणहत्रे नमः नरनारायणात्मकाय नमः कुब्जा कृष्णाम्बरधराय नमः मायिने नमः परमपुरुषाय नमः मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः संसारवैरिणे नमः कंसारये नमः मरारये नमः नरकान्तकाय नमः अनादिब्रह्मचारिणे नमः कृष्णाविष्णुकर्षकाय नमः शिशुपालशरक्षेत्रे नमः दुर्योधनकुलान्तकाय नमः विराट्कुलरवरदाय नमः विश्वरूपा प्रदर्शकाय नमः सत्यवाक्ये नमः सत्यसंकल्पाय नमः सत्यभामारताय नमः जैने नमः समुद्राः पूर्वजाय नमः जिष्णवे नमः भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः जगद्गुरवे नमः जगन्नाथाय नमः वेणुनाथविशारदाय नमः वृषभासुरध्वंसिने नमः बाणासुरकान्तकाय नमः युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रे नमः बलिप्रहावसन्तकाय नमः पार्थसारथये नमः अव्यक्ताय नमः गीतामृतमहोदये नमः कालीयफणिमाणिकरञ्जतुश्रीपदाम्बुजाय नमः यज्ञभक्त्रे नमः दानवेन्द्रविनाशकाय नमः नारायणाय नमः परस्मै ब्रह्मणे नमः पन्नगासुरवाहनाय नमः जलक्रीडासमासक्तगोपीवस्त्रापहारकाय नमः पुण्यश्लोकाय नमः तीर्थपादाय नमः वेदवेद्याय नमः दयानिधये नमः सर्वतीर्थात्मकाय नमः सर्वग्रहरूपिणे नमः परात्पराय नमः श्रीसत्यनारायणस्वामिने नमः प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सर्वं नमामि परमात्मिकां वाचां पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहां सदां सदां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं अदतिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां कामाक्षीं प्रदसम्भवाम् अनुग्रहप्रतां बुद्धिं मनगामरिवल्लभाम् असुरकाममृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमात्रं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपां इन्दिरां इन्द्रशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शुभकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं पुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्रमाल्याम्बरां श्रियं भास्करीं गर्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीं वसुन्धरां उदाराङ्गीं हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं तृणसौम्यां शुभप्रदां रूपयस्मगतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभामिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मा विष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि श्रीभुवनेश्वरीं श्रीसत्यनारायणस्वामिने नमः महालक्ष्मीदेव्यै नमः परिमलपत्रपुष्पाणि स्तोत्रशतनामानि पूजां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं सुधाचमनीयं समर्पयामि फलोपहारम् अमृतं निवेदयामि ॐ भूर्भुवस्सु वत्सुवः सत्यं त्वर्थेन परिशिष्यामि अन्नममृतमस्तु बलकर्मज्यं सोमाज्यममृताय स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ सत्यनारायणस्वामिने नमः मधुरसफलम् अमृतं निवेदयामि मङ्गलनीराजनं दर्शयामि मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः सत्यनारायणस्वामिने नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि सत्यनारायण भगवान् की नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि जय बोलो सत्यनारायण की अमोघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं सगुणं च गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः ध्यानं समर्पयामि ओम अथ कथा प्रारंभ हो। इंग्लिश में पढ़ेंगे कि हिंदी में? हिंदी में बदल चाल है, गुजराती में चाल है। आप बता दिए एक एक अध्याय सब थोड़ा थोड़ा हाँ हाँ याद दीजिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं सभी लोग।
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। फर्स्ट में छोटा सा है ना, मैं तय करता हूँ। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं Chapter 1. Once Shaunak and 88,000 other rishis assembled at the forest Naimisaranya and asked Maharshi Suta the narration of the Puranas. O Maharshi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharshi Suta replied, once Narada Muni asked Lord Vishnu, the concept of the Lakshmi, the same question. I will tell you what Lord Vishnu told Narada. So listen carefully. Once Narada, during one of his sojourns to the various worlds, came to the earth. There he saw that people suffering as a result of their past deeds. To alleviate their sufferings and bring about salvation, Narada travelled to Vishnuloka. There he found Lord Vishnu adorned with Shankha Chakra Gada and lotus in his 4 hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu asked Narada, why have you come here? Tell me what you want and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow the grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, O Narada, making can right itself all of its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace and mind, wealth in his life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu thus, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you just mentioned, how and when to perform it and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed by any month on full moon day. One must gather his friends and relatives, perform this puja with devotion and offer fruits, flour, ghee, milk, yogurt, butter, wheat flour, sugar and honey to the Lord. After the puja is over, he must read the Satyanarayana Katha and distribute the prasad to everybody. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in this Kali Yuga, this puja brings contentment. Jai Bolo Satyanarayana Bhagwan ki Jai. अतः द्वितीयः अध्यायः Maharshi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will tell you who all have observed the Satyanarayana Puja in the past. Once there lived a poor Brahmin in the beautiful city of Kasi, plagued by actual hunger. He used to wander about here and there every day. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, friends, why are you wandering aimlessly? The poor Brahmin replied, sir, I am a poor man, unable to bear the begs and hungers. I beg all my alms. Sir, if you know a way of the misery, please tell me. Whatever upon Lord Vishnu, who was in patience of the old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayan grants his devotees wishes and removes their sorrows. So you should perform his puja and inherit its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to the lake for the alms.
his mind fixed only on the one thing, namely the puja. That day he got up and a lot of money with which he brought the fruits, milk, yogurt and honey and performed the puja with the relatives and friends. With the Lord Narayan's grace, he shed his poverty and lived a concentrated life. Every full moon day, he performed the puja and finally attained the moksha. Maharshi Suta thus told the assembled rishis the story which originally was narrated by Lord Vishnu to Narad Muni. The rishis then addressed Maharshi Suta, "Oh, the great one, please tell us the details who has performed the puja." Maharshi Suta continued, "One day was a poor Brahmin from Kashi was observing the Satyanarayana Vrata. A woodcutter entered his house and asked the water. Seeing these Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired what the puja was about and what good is about the things which brings. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Narayan grace, spoke, "This is called a Satyanarayana Vrata. Along with he observed the Vrata will be all the riches I will have been bestowed with the wealth." And the woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad, and then offered and he went away. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to make by selling this firewood. That day he went to the part of the cities where rich people were living, showed the firewoods and made twice and normal profits. Pleased with his luck, and woodcutter brought bananas, sugar, milk, ghee, yogurt, honey, wheat flour, and performed the Satyanarayana Puja with his friends and relatives. By Lord Narayana, he acquired the enormous wealth, lived completely, and attained the moksha. Satyanarayana Bhagwan ki Chapter 3. दे दिए मेरे को दे दिए थोड़ा उसको नहीं ये हो गया तो आगे ले लो स्पीड पढ़ना है पर पूरी पढ़ो Mansuta continued, "O best of estates, I will not tell you the story further. In the olden days there lived a wise king by the name Ulkamukha. He had mastered all his sins and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and give gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was pure and pious woman. One day the royal couple was performing the Satyanarayana Puja on the banks of river Bhadrashila. At the time a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got up and addressed the king humbly. "O king, would you tell me what you are doing with such devotion and concentration?" The king replied, "O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord, Almighty Lord Satyanarayana." On hearing this, Sadhu spoke humbly, "O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children." The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife Leelavati that they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By divine grace, Sadhu's wife conceived, and in due course, a beautiful daughter was born to them. They named the child Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meanwhile,
Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messenger to find a suitable bridegroom for his daughter. One, uh, one of his messengers found a good natured and handsome boy from Kanchannagar. Sadhu found the boy to be suitable match for Kalavati and celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and thus angered Lord Satyanarayana. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapura that was ruled by King Chandraketu. Lord Satyanarayana placed a curse on Sadhu. One day some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the loot near Sadhu and escaped. Finding the king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into the prison. Because of Lord Narayana's Maya, nobody even listened to the what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also had their merchandise confiscated. Lord Narayana's curse did not spare Sadhu's wife either. Some robbers broke into the house and Leelavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and ran out the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and eat prasad that was offered. When she reached home, it was late night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dream and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Narayana warned that his kingdom, wealth and children would all be destroyed. Next morning the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You two have suffered a great deal because of your fate, but there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and lots of gifts and bade them goodbye. Jai Bolo Satyanarayana Bhagwan Ki Jai. Chapter 4. Sadhu and son-in-law loaded their boat with riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of a ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Narayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuable in the boat except vessels." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it.
their ascetic then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went to his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with vessels, just as had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law, who spoke. This must be the curse of the ascetic. He must be a mistake. Let us go to him ask his forgiveness. The two merchants then went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu devotion, the Lord said, Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again. On hearing this Sadhu prayed to God, O Lord, even Brahma and other devas drowned in your Maya cannot complete your various forms. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me. Upon hearing his prayers, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives, informing them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the ship and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Narayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and prayed to Lord Narayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband. So I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad and return. On hearing this, Kalavati rushed home and took the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy husband and the boat. Sadhu then returned home happily with his relatives and performed the Satyanarayana Puja every full moon day. With God's grace, they enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Jai Bolo Satyanarayana ki Jai. अतः पंचमः अध्यायः. Maharishi Sutta continued. Once there was a king called Tungabhilja who underwent a lot of misery after rushing the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a shady tree. Some cowherds were happily performing the Satyanarayana Puja nearby. The king is vehemently refused the prasad and what we say offered to the Lord. When he reached his palace, he found his kingdom, his 100 sons, his wealth and everything was destroyed. Then it occupied to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, postparted himself before the Satyanarayana Puja, performed the puja with the great devotions. Lord Satyanarayana showered his blessings and the king regained everything he has lost earlier.
He lived happily and reached Vaikuntha after the deed. Maharishi Sutta said, O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by the Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In the Kali Yuga, observations of the vrata can lead to the fulfillment of the one species. Thus ended the narrations of Maharishi Sutta. After which Saunik and other rishis returned to their respective abodes. जय बोलो सत्यनारायण पंचमोध्याय समाप्तः। अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं नरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं वन्दे। राम 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 दायकं श्रीरामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकं शंकराय किर्यमान पुण्यदान कीर्तनं श्रीजानकी मनोहरं सर्वलोकैकनाथं। सत्यनारायण भगवान की जय। प्रार्थनापूर्वकः इदं फलं निवेदयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। अमृतोपहारं मधुरसफलं महानैवेद्यं निवेदयामि। मत्स्य पायनमाचमनीयं समर्पयामि। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जगन्मातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमण रत्नजटित सिंहासन अद्भुत विराजे स्वामी चंद्रचूड़ राजा चंद्रचूड़
रामेश्वर वै श्रवणाय विश्रवणाय नारायणाय नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सत्यनारायण स्वामिने नमः नवन दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि बोलो श्री सत्य दक्षिणानि पदे पदे पापात्मा पाप संभवाद्राहिमा शरणागतवत्सला अन्यथा शरणमास्ति त्वमेव तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन सत्यनारायण स्वामी प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि यस्य स्मृत्यादनामोक्षा तपः पूजा क्रियादिशून्यं सम्पूर्णतं येन सत्यवं देवमर्प्यं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनाय पूजितं मया देव परिपूर्णं अनया ध्यानावाहन षोडशोपचार पूजा भगवान् सर्वात्मकः सुप्रसन्न सुप्रीत वरद भवतु एतत् फलं श्री सत्यनारायण स्वामी चरणारविन्दार्पणमस्तु यज्ञेन यज्ञमयं देवाः यत्र पूर्वे साक्षात् सन्ति देवाः कलशमुद्वासयामि मंडपमुद्वासयामि प्रतिममुद्वासयामि सत्यनारायण स्वामी यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमैषा भो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोके समस्ताः सुखिनो भवन्तु। आज का भगवान सत्यनारायण पूजा DFW हिंदू टेंपल में अभी हो गया। इसके बाद हम महामंगल आरती में जाएंगे। आप सबको भगवान सत्यनारायण पूजा में आशीर्वाद है। सत्यनारायण भगवान की समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय प्राणोपानविदानविदान समानसप्राणाय स्वाहा। लक्ष्मीं प्रसन्नवेङ्कटेश्वरानुग्रह प्रसादबलसिद्धिरस्तु। लक्ष्मीं प्रसन्नवेङ्कटेश्वराय नमः। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी।
पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय किस विध मिलो कृपामय तुम हो में कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा शरण पराते। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो श्रद्धा प्रेम बढ़ावो संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारण्ये भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलं हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते विश्वग्रहधारिणे महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे गोदासुरभयङ्करी सर्वकामहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगदे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सूक्ष्महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते
स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं यत्पठे भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं य पठे नित्यं धनधान्यसमभिदा त्रिकालं य पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्पठे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेत् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवासुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव दिवस्मान्मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविन्द दामोदर माधवेति तानि सर्वाणि दृश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे कृष्णपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणां नित्या प्रसीद परमेश्वरी अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी महालक्ष्मी माता की जय। नमः पार्वतीपते हर हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सद्गुणो